Already we discussed on tetravalency of carbon atom. We know that carbon has tendency to form 4 number of covalent bond because carbon no outer cell ले 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी आ कतटी इलेक्ट्रॉन हेले कार्बन आउटर सेल 8टी इलेक्ट्रॉन हम ऑब्वियसली आंसर इज 4 हेन्स कार्बन आ 4टी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो तेणु करी आमे कहू कार्बन नो वैलेंसी हैला 4 लेट टेक सम एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन The atomic number of carbon is 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10. The electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. In case of nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. In case of oxygen 1s2, 2s2, 2p4. In case of fluorine 1s2, 2s2, 2p5. In case of neon 1s2, 2s2, 2p6. All these elements have 2 number of cells. The second cell is known as valency cell. In case of carbon, the number of electron in valency cell is 4. In case of nitrogen, the number of electron in valency cell is 5. For oxygen 6, fluorine 7, neon 8. This is the number of electrons in valency cell. ताले समस्ते चाहती आउटर सेल ले 8टी इलेक्ट्रॉन करिया पई सेकेंड पीरियड एलिमेंट माने चाहती नियॉन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पालन करिया पई ताहले कार्बन आउटर सेल होची 4 नियॉन आउटर सेल 8 आ केतोटी हेले कार्बन नियॉन सहित समान हे परिबो आ 4टी हेले नाइट्रोजन आउटर सेल होची 5 आ केते हेला 8 हबो आ 3 ऑक्सीजन अच्छी 6 केते हेला 8 हबो 2 फ्लोरीन अच्छी 7 केते हेला 8 हबो 8 दैट मीन्स वी कैन से दैट कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन आउ 4टी कोवैलेंट बॉन्ड करिवो नाइट्रोजन 3टी ऑक्सीजन 2टी फ्लोरीन 1 दीज आर नोन एज वैलेंसी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ताले कार्बन नो वैलेंसी हेला 4 नाइट्रोजन वैलेंसी 3 ऑक्सीजन वैलेंसी 2 फ्लोरीन वैलेंसी 1 टेक सम एग्जांपल CH4 ताले कार्बन आउटर सेल ले 4टी इलेक्ट्रॉन अछि केतोटी हाइड्रोजन अछंती 4टी 1 2 3 4 सो टोटल 4 number of covalent bond is formed by carbon atom we have to remember that हाइड्रोजन गोटे कोवैलेंट बॉन्ड करिवो कार्बन 4टा नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 1 it is very important to draw the structure of organic molecules already we know that how can we determine hybridization? Hybridization is determined by using this formula number of sigma bonds plus number of lone pairs. For example, CH4 already we discussed that the number of sigma bond is 4, number of lone pair is 0 and hence hybridization is sp3. The shape of sp3 hybridized molecules or sp3 hybridized atom is tetrahedral. ताले CH4 shape हैला tetrahedral. Look this model. This is the model of CH4
and it explains the shape of CH4, that is tetrahedral, or it is the tetrahedral shape of CH4. This is the central atom carbon, and these are 4 hydrogen atoms, and it is the shape of CH4, which is tetrahedral. Now we determine the number of sigma bonds and pi bonds. Suppose A and B are 2 elements, in between them sigma bond or single bond is formed. That single bond is known as sigma bond, where A and B may be equal or A and B not equal. ताले जिते बेले ए और बी मध्य गोटे बॉन्ड अच्छी सेटा कह जाए सिग्मा बॉन्ड. की बॉन्ड कह जाए सिग्मा बॉन्ड. जिते बेले ए और बी मध्य डबल बॉन्ड अच्छी सेते बेले जड़े सिग्मा जड़े पाए. ए और बी सेम ही पारंती और डिफरेंट एलिमेंट ही पारंती. इफ ए और बी मध्य ट्रिपल बॉन्ड अच्छी जड़े सिग्मा दुईटा पाए, where A or B may be same or not same. Number 1, CH4. So these are all single bond and these are all sigma bond. So total number of sigma bond is 4. Example 2. In case of CH3, so total number of sigma bond is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in this way we can calculate the number of sigma bonds. So take one number of example. Molecule, number of sigma bonds, number of pi bonds. Number 1, CH2, CH2, or we can represent as in this case, the total number of sigma bonds are 1, 2, 3, 4. In double bond, 1 sigma, another is pi. So total sigma bonds are number 5 and number of pi bond is 1. Number 2 example, CH, triple bond CH. In triple bond, 1 is sigma, other 2 are pi. And these are single bond and these are sigma. So total sigma bonds are 1, 2, 3. Total pi 2. Number 10, CH3OH. ऑक्सीजन केतोटी बॉन्ड करिवो दुईटा बॉन्ड. आइदर से दुईटा बॉन्ड डबल बॉन्ड हे पारे किंबा दुईटा सिंगल बॉन्ड हे पारे. एई केस रे ऑक्सीजन दुईटी बॉन्ड करिछि, ठीक अछि, दुईटा सिंगल बॉन्ड. So total sigma bond 1, 2, 3, 4, 5 and pi bond 0. This is the basic idea और एटा को हमको मन रखिया पई पड़िबो कहार वैलेंसी केते. जहार वैलेंसी जतिकी से सेतिकी बॉन्ड निहाती करिथिबा दरकार, अदरवाइज से स्ट्रक्चर टी भूल अछि. नंबर 4, CH3 COOH. sigma, 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 sigma. So total sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and pi is 1.
तो ताहले सेमिनाना आर वर्ष कॉलेज फंक्शन मते खुंपी दिलु हेले तो से कुंपाटा माखिर लेंस भितरे गोटे गार होई रही गला कंपी देलु भारी भल कलु एटी कैलकुलेट करवा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so total number of sigma bond is 9 and number of pi bond is 0. Here also you can calculate. Number 7. These are more example. You have to calculate number of sigma bond and pi bonds. In this case, number of sigma bond are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and number of pi bond is 1. So in this way, we can calculate the number of sigma bond and number of pi bond. ताले जिते बेले गोटे बॉन्ड अच्छी सेटा कहुए सिग्मा बॉन्ड जदि दुईटी एलिमेंट मध्य डबल बॉन्ड अच्छी गोटे सिग्मा बॉन्ड एनादर इज पाई बॉन्ड जदि दुईटी एलिमेंट मध्य तीनोटी बॉन्ड अच्छी गोटे सिग्मा एंड आउ दुईटी है पाई बॉन्ड्स. सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स. कार्बन वैलेंसी है 4, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, फ्लोरीन वैलेंसी 1, हाइड्रोजन वैलेंसी 1. फॉर अनदर एग्जांपल CH3F. In CH3F सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4. CH3 CH2F 1 2 3 4 5 6 7. So already we know that the discovery of organic compounds and the history of organic compounds. Then we discuss on the definition of organic chemistry, then the source of organic compounds. Then today we discuss the tetravalency of carbon and also how can we determine the number of sigma bond and pi bonds. In next class we study on how can we represent organic molecules. In next class we study on how can we represent or representation of organic molecules.